Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, from today, we are starting this new series. A new series where I will be discussing various steps that will ultimately lead you to success in SBI PO examination 2024. Now, we are expecting this notification in the month of November, and we are expecting this date of this exam in the month of December. Some dates are already in circulation on social media, but I always prefer to wait for dates when official communication comes. But for our preparation purpose, we can take those dates as done dates, and we can start our preparation in right earnest. On this channel, I am already telling you how you should prepare for SBI PO and timetable videos. Once in 3 days, I am already posting and you are following that schedule. Through this series of videos, we will be discussing some pitfalls. We will be discussing some steps that must be taken by the candidates so that they can convert their dream of becoming SBI PO into reality. Every year, hundreds of our channel subscribers get selected as SBI PO and today there are hundreds of our candidates or subscribers. Those are working successfully in SBI PO and some of them has already taken the promotions and they have moved above the ladder. So there are certain basic things which is to be looked into for success in such examination, and we will be talking these things in series of videos besides our daily timetable video that will continue separately. Once in 3 days, initially I will give that video and subsequently we will make it alternate day video. And just before the examination, we can even change the frequencies to daily. Now, the step number 1 is always acquisition of knowledge. Whenever we are going for any competition, the important thing is we must understand the exam. And the moment we understand the exam, then we can draw our strategy and we can act on that. So first thing is to understand what is the complexion of the exam. We have to read the last year notification. So for your benefit, I am placing the last year notification on our Telegram channel. Telegram channel link is available in description. Visit the Telegram channel, see that notification. That notification will give you idea the composition of exam. So this year exam may be on the similar pattern and there may be some changes also, but that depends upon State Bank, but we will assume that the same pattern will continue. So here you will find that the pre-level examination, we are having 3 major subjects, that is English, Quant and Reasoning. And once we move to the main level examination, the general awareness also adds on. And that is followed by interview and group discussion and then final selection. So first thing is we will focus on pre-level exam. Side by side you can prepare for main level exam also. That is step number 1. So what should be your step first? Step first is I must fill the pitfalls. And every year, a lot of candidates, they lose the race merely by few marks. And why? Because they are weak on certain basic things. They may be strong on very advanced things. Sometimes the overconfidence also kills them. So the first thing is we must give importance to very minute things, very small things. And these minute and small things are the subjects are comprises of topics. So if a person is strong in topic, a person is automatically strong in subject. And the moment you are strong in subject, your overall score will definitely improve. So the first approach is to handle each subject by improving our topic-wise knowledge. So you should list out few topics which you feels you are still weak. For this exercise you can attempt one full length mock test
And after attempting the full length mock test, you can know where you are lacking. Make a clear cut list subject wise. What are the topics in English that require your attention? What are the topics in quant that require your attention? And what are the topics in reasoning that require your attention? So in all the three subjects, that is English, quant and reasoning, make topic wise list. Now, how to improve topic? There can be various techniques. Some people may like to do self-study. Some people may like to attend the classes. Some people may like to read the textbook. So methodology may be different. But in this video, I am suggesting the most simplest way of improving topic knowledge. And that is, you can say, cost effective as well as time effective, because these two things are very important. What is my cost of acquiring the knowledge, and what is how much time it is taking away. So there are certain tools where a lot of your time is wasted and the net extraction is very less of knowledge. So in self-study module, you can drive more knowledge by spending less time. All other techniques require more time, and then you are able to extract the knowledge. Because say there is a lecture going on, there may be certain things which you are knowing, there may be certain things which you may not be knowing. So you are listening the entire lecture. So some of your time is drained away. But once you do the self-study, you only devote time where it is needed. That way you save time, and that way you save your money also. So topic test is a very great tool that can help you acquire knowledge topic wise. So I am suggesting you a topic test series. The topic test is different than sectional mock test. Some people are confused. They are not able to distinguish between topic test and sectional mock test. Topic test means topic wise test and solutions thereon to help you to gain knowledge topic wise. So the first step is acquire this topic test. Link of this topic test is available in description and comment column. Click the link, register, take topic test and apply coupon code AA03. You will have 10% off. You can buy this through Smart Kida app also. Download the app, select this topic test and apply coupon code AA03 to have 10% off. Many of you may be having full length mock test. Many of you may be having sectional mock test. So besides that, you must take the topic test also. And you must have 4 tools: full length mock test, topic test, sectional mock test and speed drill. That is the deadly combination that will help you to gain lead over others. Because some people may be only using full length mock test, but they are not good in topics, they are not good in sectional mock test, they are not good in speed and accuracy. So they will be left behind. But if you are good in topic, you are good in subject, you are good in speed and accuracy, and also using the full length mock test, you will be ahead of others. So first thing is acquire the topic test. After acquiring the topic test, what you will do is you will attempt topic test of a topic which you feel you are weak. Say there are 10 questions in one part of that topic test, you will attempt all the 10 questions. After attempting all the 10 questions, you will observe that answer of 5 questions is correct. And there are still 5 questions where your answer is wrong. Now see the solution of these 5 questions. Read the solution carefully. Understand how this question can be solved. And after understanding the concept, again reattempt the same topic test. When you will reattempt the same topic test, it is likely that now 8 out of 10 are correct answers. Still 2 are wrong. Again see the solution. Try to understand the solution and reattempt this same topic test once again. And with this process, attempting the same topic 3 to 4 times, you will feel now you are getting near 100% marks, 9 out of 10 or 10 out of 10. That means now this topic has become strong. Then you can move to next topic. Then adopt the same strategy, then move to next topic. So the first step towards acquisition of knowledge is use of topic test to build our knowledge. So if you can gradually build your knowledge, your foundation is becoming stronger day by day. And a strong foundation
will help you to fly, because for every good flight, what is required? First is ground running. Once you are able to do successful ground running, then only you can fly. For every aircraft, this is the basic principle. So first we have to run on ground and then we have to fly. So similar is the competition. First we have to run on ground, and running on ground is topic test. So step number 1 is use extensively topic test to gain knowledgeable, to become knowledgeable in each and every topic which you feels you are weak. So I will be giving more tips in coming series. We will be having lot of videos on this. Step by step I will tell how you can build your knowledge. Watch all the videos. I am making a playlist also for this that will be helpful for every candidate in coming days. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI PO एक ऐसा एग्जाम है जिसको काफ़ी कैंडिडेट ड्रीम करते हैं, जिनकी ड्रीम जॉब ये होती है, और इस ड्रीम को हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारी समस्या होती है। तो ये इस साल हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस के जरिए आपको वो रास्ते बताऊंगा जिससे आप इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारे रास्ते आप एक एक करके जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और परिवर्तन पाएंगे। हर साल सैकड़ों कैंडिडेट हमारे चैनल के, हमारे सब्सक्राइबर SBI PO चुने जाते हैं, और आज की डेट में सैकड़ों की तादाद में ऐसे SBI POs हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, जिनको इस चैनल से मदद मिली है। उनमें से कईयों ने एक लेटर और ऊपर चले गए हैं, कईयों की एक प्रमोशन भी हो गई है, कई कैंडिडेट्स की 2 प्रमोशन भी हो चुकी है। 2012 से मैं ये आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, और गाइडेंस के जरिए काफ़ी लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो इन सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम कुछ बेसिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। होता ही है, कई बार हमारी एडवांस नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, मगर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट कर देते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे अल्टीमेटली सक्सेस में रुकावट का काम करती हैं। कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस हमें उस एग्ज़ाम में सक्सेस से दूर कर देता है। तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कैसे हमें अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। तो जो सक्सेस है, सक्सेस का मंत्र क्या है कि अगर मैं कुछ ना कुछ नॉलेज रोज़ गेन करूं तो एक दिन मैं हाईली नॉलेजेबल हो जाऊंगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस मैं आपको दूंगा, और इसके साथ साथ हमारी जो टाइम टेबल वीडियोज़ और जो 1 in 3 days मैं दे रहा हूँ वो चलती रहेंगी। बाद में हम उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दिन में एक कर देंगे, और बाद में डेली भी करेंगे उसको। एक्सपेक्टेड डेट एग्ज़ाम्स की दिसंबर की है, सोशल मीडिया पे ये डेट्स चल रही हैं। मैं डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स की चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि डेट जब तक ना आ जाए मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ, मगर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन डेट्स को सही मानते हुए अपना लक्ष्य लेकर चलेंगे कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने की संभावना है और नवंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इन 2 एजम्पशंस को लेके हम ये अपना काम शुरू कर रहे हैं, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहली चीज़, स्टेप नंबर 1 क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, मेरी कमज़ोर कड़ी क्या है, क्योंकि कमज़ोर कड़ी ही हमें सफलता और असफलता की तरफ धकेलती है। तो पहला आपने एनालिसिस ये करना है कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम को समझें उसके लिए हमें पुराना नोटिफिकेशन देखना चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा इसमें एग्ज़ाम किस तरह का होता है। तो आपकी सुविधा के लिए लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा रहा हूँ, उसको पिन भी कर दूंगा। उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको एग्ज़ाम का पता लग जाएगा, प्री में क्या क्या सब्जेक्ट है, मेन में क्या क्या है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू है, और फिर फाइनल सिलेक्शन है। तो जो अगर हम 3 विषय जो प्री के हैं उनको पहले फोकस में लें, और साथ ही साथ कुछ मेन के विषय भी हम साथ साथ लेके चलें, तो हम सक्सेस पा सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जो आपका इंग्लिश है, क्वांट है, रीजनिंग है, उसके अंदर आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां आप कमज़ोर हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए उन टॉपिक्स की जहां पर आप वीक हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। उनकी लिस्ट बनाने के बाद आप उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ। उसके 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है हम कोई क्लासेस अटेंड करें,
दूसरा तरीका हो सकता है हम सेल्फ स्टडी से करें, और तीसरा तरीका ये हो सकता है कुछ किताबों के जरिए हम सेल्फ स्टडी प्लस कोई सेशन अटेंड करके उसको करें। मेरा मानना यह है कि जो सेल्फ स्टडी है वो सबसे अच्छा मेथड है इसके अंदर, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम इफेक्टिव भी है। क्योंकि जब हम क्लासेस अटेंड करते हैं तो कई बार हम वो चीज़ें भी पढ़ रहे होते हैं जो मुझे नहीं चाहिए होती और मेरा टाइम उसके अंदर जाया हो जाता है। सेल्फ स्टडी में मेरे पास क्या लिबर्टी होती है कि मैं सिर्फ वही पढ़ता हूँ जो मुझे पढ़ना है, तो मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। जो टाइम इफेक्टिवनेस बेस्ट होती है सेल्फ स्टडी के अंदर, और जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर कई बार मेरा काफ़ी टाइम स्पाइलेज भी होता है। मगर ये आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद है। मगर मैं आपको सेल्फ स्टडी मॉड्यूल से कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर बताऊंगा, और अधिकांश हमारी स्ट्रेस सेल्फ स्टडी पर ही रहती है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि हम टॉपिक टेस्ट को एक एजुकेशनल टूल की तरह इस्तेमाल करें अपनी टॉपिक वाइज नॉलेज बढ़ाने में। टॉपिक टेस्ट अलग चीज़ है, सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग चीज़ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग चीज़ है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं, उनके पास सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वो समझते हैं मेरे पास ये टॉपिक टेस्ट है। टॉपिक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, टॉपिक टेस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और इन टॉपिक टेस्ट को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03, 10% ऑफ आ जाएगा। आपके पास 4 बेसिक वेपन्स जरूर होने चाहिए। ये डेडली वेपन्स है। पहला फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दूसरा टॉपिक टेस्ट, तीसरा सेक्शनल मॉक टेस्ट और चौथा स्पीड ड्रिल। ये चारों के अलग अलग यूज़ हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज़ में मैं आपको इसको समझाता जाऊंगा। अब आपने टॉपिक टेस्ट ले लिया और टॉपिक वाइज हम नॉलेज बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस टॉपिक टेस्ट को सॉल्व करेंगे जिस टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ। उसका हमने एक टॉपिक टेस्ट उठाया, 10 क्वेश्चन है, 10 सॉल्व किए। हो सकता है पहले अटैम्प्ट में आपके 5 आंसर करेक्ट आ जाएं और 5 आंसर आपके गलत आ जाएं। क्योंकि कई लोग कहते हैं सर पहले पढ़ ले, सिलेबस कर ले, फिर करेंगे। ये अपने आप में सिलेबस ही है, अपने आप में पढ़ाई ही है, क्योंकि यहाँ से आप कम टाइम लगा के अधिक चीज़ें सीख सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, 5 आपके ठीक हो गए आंसर, क्योंकि किसी भी आदमी की जीरो नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है 10 में से 1 ही ठीक हो, कोई बात नहीं। मगर टॉपिक टेस्ट के रूट से आप कम टाइम में अधिक नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो आपने 10 अटैम्प्ट किए, 5 गलत हो गए। अब 5 जो आपके गलत हुए हैं उनका सोल्यूशन देखिए आप टॉपिक टेस्ट से। उनका सोल्यूशन देखने के बाद उसको समझिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जब वो चीज़ समझ में आ गई, इसी टॉपिक टेस्ट को दोबारा अटैम्प्ट करिए। हो सकता है सेकेंड अटैम्प्ट में आपके 8 आंसर ठीक हो जाए, अभी भी 2 आंसर गलत हो गए, फिर उन 2 का सोल्यूशन फिर देखिए, फिर समझिए, फिर तीसरी बार करिए। और ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक आपके 9/10 ठीक ना हो जाए या 10/10 ठीक ना हो जाए। फिर जैसे ही एक टेस्ट परफेक्ट हो जाए, दूसरे टेस्ट में मूव कर जाएं, फिर तीसरे पे मूव कर जाएं, फिर चौथे पे मूव कर जाएं, और इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को में से एक एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो ये जो टॉपिक टेस्ट है ये बहुत ही एसेंशियल टूल है, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको खाली स्टेप नंबर 1 बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में हम बाकी स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे और सारे स्टेप्स आपने यूज़ करने हैं एग्ज़ाम से पहले, और आप देखेंगे कि आपके अंदर रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। क्योंकि ये काफ़ी मैंने कमेंट्स आपके पढ़े कि सर कैसे तैयारी शुरू करें, कैसे तैयारी शुरू करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस साल हम एक ये नई इनिशिएटिव आपके साथ लेते हैं और नई सीरीज़ शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।